So, welcome back to this live session. इस लाइव सेशन में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे। तो प्रीवियस लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से पाइथन इंस्टॉलर को इंस्टॉल अपने मशीन में इंस्टॉल करना है। फिर आपके जो सिस्टम है वो रेडी हो जाएगा पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो मैंने अपनी मशीन में पहले से पाइथन इंस्टॉल कर रखा है। तो अगर आप देखें तो एक फोल्डर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है डी ड्राइव में पाइथन कोड नाम से, और उसके अंदर एक फ़ाइल को मैंने सेव करा है। ये एम्प्टी फाइल है और फाइल का नेम है फर्स्ट कोड। और अगर मैं इस फाइल को खोलता हूँ नोटपैड में तो ये कुछ इस तरीके से खुलती है फाइल, एम्प्टी फाइल। तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो हमारा डॉक्यूमेंट है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पाइथन का, उसके हिसाब से लेट्स एग्जीक्यूट द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन। तो ये इन्होंने एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी है, और इस एक्सप्रेशन को जैसे ही हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो जो आउटपुट होगा वो होगा सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। So इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन है 4। So let's write this simple program, our first program in Python। 2 plus 2 सेव कर देते हैं। अब एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और यस ओके। सो कमांड प्रॉम्प्ट में आपको जाना है डी ड्राइव में। डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है पाइथन कोड्स नाम से। उसके बाद इस फोल्डर के अंदर जैसे मैंने बताया कि फाइल हमारी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये फाइल। तो इसे हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे पाइथन स्पेस और फाइल नेम है हमारा फर्स्ट कोड, और जो फाइल का एक्सटेंशन रहेगा वो है py। सो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो इस फाइल के अंदर जो भी कोड होंगे वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे और हमें आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा।
सो जो आपका प्रोग्राम था वो तो एग्जीक्यूट हो गया, बट डिस्प्ले में हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। तो आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। let's just check it. ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम था, बट हमें आउटपुट यहाँ पे नहीं मिला। एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं। तो लेट्स कंपाइल द प्रोग्राम अगेन। कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाता हूँ मैं फिर वापस, और फिर से कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें आउटपुट मिल गया 4। Alright, so let's write some more programs. For example, division का program. अभी हमने addition किया था, let's do some division here. So 17 divide 3. Let's change this variable name div and print this. Control S. Now let's execute this program once again. So now the output of our program, let me just close this. Okay, so the output of our program is 5.66. Okay, let's check more programs from document. Let's check this. The equal sign is used to assign value to variable. तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे हमने equal sign का यूज़ किया था। This is the equal sign and this is the variable name. अब इस expression का को evaluation होगा और जो भी value होगी, the value will be assigned to this variable div, and in the next line what we are doing is we are just printing that value on standard output. So इस प्रोग्राम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे असाइनमेंट साइन, ये इक्वल साइन का यूज़ किया है। यहाँ पे एक वेरिएबल विड्थ है और एक हाइट है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। सो let's execute this program.
तो मैंने पूरा ब्लैंक कर दिया है प्रोग्राम को। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं विथ, जिसमें हम कोई वैल्यू डालते हैं जैसे 4। फिर कोई एक वेरिएबल लेते हैं हाइट, और इसमें वैल्यू स्टोर कराते हैं, और मैं कहूँगा साइन कराते हैं 10। नेक्स्ट हम प्रिंट कराते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू वेरिएबल विथ मल्टीप्लाई हाइट। सेव कर देते हैं। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आपका 40 आना चाहिए। सो कमांड प्रॉम्प्ट में फिर से कंपाइल करके देखते हैं। तो ये आपका आउटपुट आ गया 40। ओके, सो अभी तक हम नंबर पे काम कर रहे थे। उसके बाद हम लेट्स स्टार्ट वर्क ऑन सम टेक्स्ट। ओके, तो ये तो हम नंबर पे काम कर रहे थे। लेट्स स्टार्ट वर्क ऑन सम टेक्स्ट। यहाँ पे एक कमेंट में लिख देता हूँ टेक्स्ट। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं सिटी नाम से, और उसके अंदर हम वैल्यू असाइन करते हैं टेक्स्ट दिल्ली। Let's print its value, the city value. So कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। फिर से इसी फाइल को एग्जीक्यूट कराते हैं। Now you can see that our program prints the value Delhi of variable city। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को डिस्प्ले कराते हैं। फिर हम और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं टेक्स्ट में, जैसे कि न्यू लाइन हमें प्रिंट करनी है। तो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, कॉपी एंड पेस्ट हियर। एक वेरिएबल ले लेते हैं पैरा, और यहाँ पर हम
पूरे टेक्स्ट को हमने पेस्ट किया। फिर पैरा जो वेरिएबल है इसको हम प्रिंट कराएंगे। अब क्या होगा, जो हमारा प्रोग्राम है वो सबसे पहले इस लाइन को प्रिंट करेगा, देन वो डिटेक्ट करेगा इस कैरेक्टर को, फिर न्यू लाइन इंसर्ट करेगा और सेकंड लाइन में ये कैरेक्टर आपका प्रिंट करेगा। So let's compile and check. So here you can see the first line, this is first line, and next line is this. So document के हिसाब से हमने दोनों लाइन प्रिंट करा दी। और देखते हैं पाइथन में हम और क्या क्या कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स को कंकैटनेट कर सकते हैं using this operator. तो इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। तो एक दो वेरिएबल्स हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे हो गए फर्स्ट पैरा, और एक और वेरिएबल लेते हैं सेकंड पैरा। इसमें हम ये जो सेकंड लाइन है वो स्टोर कराते हैं। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट लाइन और ये हो गई सेकंड वेरिएबल में सेकंड लाइन। देन हम एक और वेरिएबल लेते हैं कॉनकैट नाम से, जिसके अंदर हम दोनों टेक्स्ट को ये प्लस ऑपरेटर से कॉनकैटनेट कर देंगे। ओके, देन हम प्रिंट करेंगे कॉनकैट को। So it should print both first line and second line. Let's check. You can see that our strings have concatenated both first line and second line. Okay, so let's go to another operation. Like we can also repeat the text using this operator. So repeat करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें सेकंड पैरा को रिपीट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम कर देते हैं। लेट्स सी इफ इट इज रिपीटिंग। So here it repeats 3 times, 1, 2 and 3. Okay, so let's move on. String can be indexed, subscripted with first character having index 0, and there is no separate character type. A character is simply a string of size 1. Okay,
So जो स्ट्रिंग आपकी होती है प्रोग्राम में, वो आपकी एज ए अरे, वी कैन ट्रीट इट एज ए अरे। लाइक हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स होता है। पहले कैरेक्टर का इंडेक्स होगा 0, नेक्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स होगा 1। अरे की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं पाइथन में किसी भी स्ट्रिंग को। तो जैसे कि ये हमारा पाइथन स्ट्रिंग है और ये हमने असाइन कर दिया वर्ड वेरिएबल में। अब अगर हम फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करते हैं, इस तरह से हम इंडेक्स, यहाँ पर हम इंडेक्स को इंडेक्स देते हैं, तो हमने 0 इंडेक्स दिया। 0 इंडेक्स को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं इस स्ट्रिंग का। सो 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर स्टोर होगा वो पहला कैरेक्टर होगा p। इसी तरह से फिफ्थ जो कैरेक्टर होगा वो होगा आपका n। सो लेट्स चेक, लेट्स डू दिस इन आवर प्रोग्राम। तो मैंने अपने वेरिएबल का जो नाम है वो चेंज कर दिया है। माई टेक्स्ट इज माई न्यू वेरिएबल, और यहाँ पे हम इसके अंदर स्टोर कराएंगे हेलो यू। ओके, सो जो h होगा, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर, ये आपका 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा। तो अगर मैं इसे प्रिंट कराना चाहूँ तो मुझे वेरिएबल नेम, देन दिस इज हाउ वी हैव टू गिव द इंडेक्स वैल्यू, जो भी कैरेक्टर को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो ये जो प्रिंट करेगा वो h प्रिंट करेगा। लेट्स चेक। सो you can see is printing h, the first character. Index may also be negative numbers to start counting from right. राइट से अगर हम स्टार्ट करें तो ये इस तरह से नेगेटिव नंबर भी हम चूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए। अब उसके बाद अगर हमें रेंज को एक्सेस करना है स्ट्रिंग के अंदर, 0 से लेके 2 तक, मतलब एज ए सब स्ट्रिंग और स्लाइस हम कह सकते हैं। अगर हमें स्लाइसिंग करनी है स्ट्रिंग की तो वो भी हम इस तरह से 2 इंडेक्स हमें देने होंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू एंड एंडिंग इंडेक्स वैल्यू। तो लेट्स डू स्लाइसिंग। तो ये हमारा माई टेक्स्ट नाम से वेरिएबल था, स्लाइस करके हम खाली हेलो को स्लाइस आउट करते हैं, सब स्ट्रिंग हम निकालते हैं इसमें से। तो उसके लिए हम एक स्टार्टिंग एड्रेस जो कि 0 ही है, कॉलन काउंट कर लेते हैं 0 1 2 3 4। तो ये एंडिंग इंडेक्स इज 4। save, now let's compile it. It should print hello, substring hello.
what I think it is repeatedly printing H and HEL like that. Not okay. So it's printing hello instead of hell. एक और एडवांस इंडेक्स हमें देना होगा 0 1 2 3 4 फोर्थ तो लास्ट फिफ्थ कैरेक्टर लास्ट हमें देना होगा 5 now it will print hello I guess so now it's print hello so this is ये आपका सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करने के लिए then what is it not there so this is the index जो हम अभी बात कर रहे थे फर्स्ट कैरेक्टर स्टोर एट 0 सेकंड कैरेक्टर एट 1 2 3 4 5 6 like that अगर हम ऐसे इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं जो बहुत विच इज़ टू लार्ज मतलब कि जो वर्ड था वो 0 से लेके 6 तक ही हमारे इंडेक्स थे अगर हम 42 टूथ इंडेक्स को एक्सेस करेंगे देन it will result in error and Python string cannot be changed. They are immutable. Therefore, assigning to an index position in a string result in error. जो पाइथन स्ट्रिंग्स होती हैं वो आप उसे चेंज नहीं कर सकते अगर आप पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्ट्रिंग को चेंज करना चाहेंगे उसमें नई वैल्यू असाइन करेंगे and it will give you an error. Let's try it. Let's print the entire string here, but before that let me attempt to change the first character of this string to y. I should generate an error. So you can see here line 6 जो कि हमारी ये लाइन थी जहाँ पे हम असाइन कर रहे थे नया कैरेक्टर एट इंडेक्स 0 कि this action doesn't support मतलब हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते okay
ओके, स्ट्रिंग वाला पार्ट, टेक्स्ट वाला पार्ट तो पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद आता है आपका लिस्ट। सो लिस्ट एक तरह से आपका जैसे सी प्रोग्राम में एरे होता है उस तरह से आप मल्टीपल values can be stored into a single variable using a list। एक definition भी दी है, Python knows a number of compound data types used to group together other values. The most versatile is list, which can be written as list and of comma separated values between square brackets. List might contain items of different types, but usually the items all have same type। मतलब different types के item भी हम store करा सकते हैं, but usually we store same type of items। So let's copy it, this line, and let's remove everything। Now we are working on list। तो हमारे पास एक स्क्वायर नाम से वेरिएबल है। Let's change it। Let's give it my list, जिसमें हमने रैंडम वैल्यू स्टोर करा दी है 149 25 ऐसे 27 32। ओके, सो जैसे हम स्ट्रिंग में वैल्यू एक्स का पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करते थे, इसी तरह से we can access list value। So for example मुझे प्रिंट करना है my list में at index 1। तो 0 पे तो हमारा 1 है और 1 पे हमारा है 4। we should print 4। let's check। so it prints 4, you can see here। what else we can do is list also support operations like concatenate। तो इस तरह से concatenate भी हम कर सकते हैं। कोई दूसरी लिस्ट है हमारे पास एंड दोनों को मर्ज करना है, we can do using this plus operator easy। unlike string which are immutable, जैसे हमने देखा था हम कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, list are mutable type। it is possible to change their content। तो string में तो हम नहीं कर पाए थे, but here we can change the values in the list। so let's change at index 1 पे हम रख देते हैं 10। now it should print 10 instead of 4। ये 4 की जगह 10 रिप्लेस हो जाएगा। let's just compile it and
and you can see the 10 value 10 printed. So in the list we have replaced 4 with 10. We can use append to add a new item to the list. This is the list of string. We can also calculate the length of the list, and this will give us the number of items the list contains. So if let's remove both of line and print what length of my list. So how many items this list contain? Total 7. So it should print 7. Let's compile. Length is so the keyword is len, not length. Let me correct it. All right, compile it again. So it prints the total number of items, 7. So we have covered list. Now section 3.2. First step toward programming. So here what we are doing, we are printing Fibonacci series. So let's do it. Let's write a program for Fibonacci series. So the first line हमने दो वेरिएबल लिए a और b, जिसमें हम वैल्यू पास कराएंगे. यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है जो डॉक्यूमेंटेशन में. let me write it differently. थोड़ा इजी करके इसे लिखता हूँ. एक वेरिएबल है a जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0. सेकंड वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1. फिर हम एक while लूप स्टार्ट करेंगे. while
लूप है जिसके अंदर की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कंटिन्यू रन करती हैं जब तक कि कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं होती। तो वाइल्स, और उसके बाद मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी होगी। अगर हमारा ए छोटा है 10 से, देन कॉलन। अब यहाँ पे मुझे टैब देना होगा, इंटेंट, क्योंकि पाइथन में आपका इंटेंट यूज होता है। अगर आप किसी लाइन की सब लाइन आप लिख रहे हैं तो वाइल लूप के अंदर अगर हमें लिखना है तो हमें टैब देके हमें टैब देना होगा। then we have to print की वैल्यू a, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, a में a को रिप्लेस करेंगे b से, एंड b में हम वैल्यू डालेंगे a प्लस b। दिस इज इट। तो सबसे पहले 0 प्रिंट होगा। सबसे पहले वाइल लूप चलेगा हमारा, a की वैल्यू हमारी 0 है, जो ये कंडीशन है वो आपकी ट्रू हो गई। देन हम वाइल लूप के अंदर आएंगे, 0 को प्रिंट करेंगे। फिर हमें हमारा जो a है, a की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी b से। b की वैल्यू थी हमारी 1, तो अब a की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, one, and let's just keep it like that. Let's print first this program. Oh, it's different. What if I then I change and again it's ratio.
Just keep it like that. A plus B. So we are assigning the value of B में A में हम B की वैल्यू असाइन कर रहे हैं और B में A प्लस B की वैल्यू असाइन कर रहे हैं पैरेलल. So this is the Fibonacci series. This match with the documentation. So I guess we have finished this all. Let's go to next topic. More control flow tools. अब हम इसमें सबसे पहले सीखेंगे if conditions. तो एक ही फाइल हमने जब से हम इसी फाइल पे काम कर रहे हैं. Just delete everything. Now we are working on control flow tool. और सबसे पहले हमारा if condition. So let's write if condition program here. All right. So let's write if condition program here. तो एक वेरिएबल ले लेते हैं x और इसमें वैल्यू हम असाइन करते हैं 10. Then again there is another variable, we let's assign it a value 20. फिर हम क्या करते हैं if कीवर्ड का यूज़ करेंगे अगर हमें if कंडीशन यूज़ करनी है. स्पेस then the condition. तो यहाँ पे हम देते हैं if x is less than y. तब हमें क्या करना है इंटेंट देके. इंटेंट का आपको हमेशा ध्यान रखना if के बाद इंटेंट, क्योंकि अगर उस if के अंदर हमें स्टेटमेंट लिखनी है तो हमें टैब देना पड़ेगा यहाँ पे. अगर टैब नहीं देते हैं तो आपका प्रोग्राम में एरर आ जाएगी. सो टैब एंड प्रिंट अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो. मुझे कॉलन मैं लगाना भूल गया, यहाँ पे कॉलन लगाना है. प्रिंट string x is greater than x is less than y. Else
अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, another print then y is y is greater than x. Let's compile it. So the program should print this. No. The program should print, if the condition is true, then it should print this: x is less than y. All right, so let's compile it. So there is an error, else part. Is it, I don't know, is it the intent error? Intent error. Now we have intent error. Oh, we have this syntax error. Let's correct it.
Not sure where the error is. Okay, indentation. I think the error is in indentation. Yeah, absolutely. It will compile, I guess. No, yeah, it's compiled now. So x is less than y. Indentation, the error was in indentation. So this statement comes inside the if statement, and both statements are start with no indentation और इक्वल इंडेंटेशन यहाँ पे हमें टैब देना यहाँ पे हमें टैब देना सो इंडेंटेशन का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर हम कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो हमें वी हैव टू गिव अ टैब let's change it to 40 now this condition will false and this part will be executed but here the statement is wrong. Let's change it. X is greater than y. Either x is less or either it is greater. Let's compile it. Now we have x is greater than y. Okay, now let's go to for loop. तो if condition आपकी यहाँ पे इस तरह से आपको if condition का यूज करना है let's write a program for loop. तो for loop में सबसे पहले एक लिस्ट हम ले लेते हैं लिस्ट हमने अभी अभी पढ़ा है लिस्ट के बारे में यहाँ पे एक वेरिएबल वर्ड्स के अंदर वर्ड्स नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ आइटम्स हैं ये इसका टाइप है लिस्ट एंड इट कंटेन total 3 items cat window and this is I don't know let's change it computer and let's add more items mobile TV okay now हमें for loop यूज करना है तो for loop जैसे बाकी लैंग्वेज में हम फोर की पाइथन में भी फोर का कीवर्ड का यूज करते हैं एंड स्पेस वेरिएबल कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है माई वर्ड या दी वर्ड एन वर्ड्स वर्ड्स के अंदर में पर्टिकुलर वर्ड तो ये लूप आपका लगा हर आइटम के लिए एग्जीक्यूट होगा पहले कैट फिर विंडो कंप्यूटर मोबाइल then TV let's begin it and inside it print the word
Okay, so let's compile it. So it should print all the items in the list. So you can see here cat, window, computer, mobile, TV using this for loop. तो यहाँ पे भी आपको इंडेंटेशन का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फुल लूप के अंदर में हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है। अगर हम इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये हमने टैप दे के पीछे कर दिया और फिर हम अपने पाइथन प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट एन एरर टाइप is indentation error. Expected an indented block after 4. Indented, we use tab for indentation. So always remember it. So full loop finish. Now हम full loop के अंदर भी if condition लगा सकते हैं, जैसा कि नेक्स्ट इस प्रोग्राम में बताया। तो ये हमारा फुल लूप चल रहा है और हमें इंडेक्स पता करना है कि कंप्यूटर हमारा किस इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे और दी वर्ड को मैच कराएंगे किससे, इफ इट मैच विद कंप्यूटर। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो what we will do, we'll print the word concatenation is at, then print what we have to print the index. How do I print index? Alright, हम अपने खुद का इंडेक्स बना सकते हैं 0। And +1. Let's compile it. Syntax error. Expected. We have condition start.
Mm-mm. Okay, so it prints the computer is at index 2. Really? 0, 1, and it's at index 2. So we use our own index, we maintain using वेरिएबल आई ने अपना खुद का इंडेक्स मेंटेन किया है यहाँ पे। तो जब हमारा दी वर्ड की वैल्यू कंप्यूटर थी, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, देन जो भी आई की वैल्यू होगी, ऑब्वियसली जो वैल्यू आई की वैल्यू उसकी वर्ड जो लिस्ट है उसके इंडेक्स की इक्वल ही होगी। तो जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो आई की वैल्यू थी 2 और उसने प्रिंट कर दिया कि पर्टिकुलर कंप्यूटर वर्ड जो है हमारा वो 2 पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लूप का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए आई गेस इतना ही। आगे के प्रोग्राम हम नेक्स्ट लाइव सेशन में देखेंगे। तो लेट मी रिकॉल यू, आज हमने क्या क्या सीखा। हमने कैसे नंबर को कैलकुलेट करना है, स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट करना है, ये सीखा। फिर हमने सीखा लिस्ट को कैसे डिफाइन करना है, कैसे यूज़ करना है, लिस्ट में आइटम्स कैसे ऐड करने हैं, कैसे उन आइटम्स को एक्सेस करना है। फिर हमने कंट्रोल फ्लो देखे, इफ स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे काम करती है, उसे सीखा। उसके बाद फोर स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, इंडेंटेशन का क्या रोल है पाइथन में, और अगर हम इंडेंटेशन का ध्यान ना रखें तो कंपाइलेशन में क्या क्या इशू आ सकता है, ये हमने देखा। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू दिस पाइथन लर्निंग थ्रू दिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट in next live session. Thank you very much for joining.